how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter first, the sentences. Okay, let us start now this chapter. A group of words which makes complete sense is called a sentence. शब्दों का वह समूह जो मिलकर के एक कंप्लीट सेंस बनाता है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं. ओके किड्स, एग्जाम्पल द गर्ल्स आर प्लेइंग, लड़कियां खेल रही हैं, ये क्या है? अपने अपनी कंप्लीट सेंस है. ठीक, नेक्स्ट, विजय इज द स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस. नेक्स्ट, cows are sitting under a shady tree. The children are playing in the park and the books are on the table. There are 4 kinds of sentences. Number first, assertive or the declarative sentences, जिसको हम a statement, a fact or in the assertions होता है. Next one, interrogative sentence. Interrogative sentence में always question create होता है. Okay. Next one, imperative sentence. Imperative sentence always depend on command, wish and entity. Next one, exclamatory sentences. Exclamatory sentences depend on exclamation, strange thoughts or feeling. Okay. First of all, we discuss the assertive or the declarative sentences. And assertive or the declarative sentences, number first है says or states something. वह सही मायने में कुछ कहना चाहता है. नंबर 2, can be affirmative or negative. यह सेंटेंस या तो affirmative हो सकते हैं या फिर negative हो सकते हैं. Affirmative मीन जो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, उसको हम affirmative, जिनमें केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, और दूसरे होते हैं नेगेटिव जिसमें नॉट का यूज किया जाता है. नेक्स्ट is always followed by a full stop, और हमेशा ध्यान रखा जाता है कि यह फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है. That's called the assertive sentences. These sentences convey a fact to make a statement. यहाँ पर जो sentences है उसको बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं. जैसे assertive sentences are of the 2 types. Assertive sentence 2 types की होती है. नंबर फर्स्ट affirmative sentence and number second negative sentences. Okay. Example है he felt sad for his friend. वह अपनी फ्रेंड के लिए क्या है? sad है. तो that's called a affirmative. Next he did not argue with her. वह उसके साथ argue नहीं करता. So that's not का use हुआ है. That's called a negative sentence. In the above examples, number first is affirmative since it is making a positive statement, while sentence 2 is negative since it is making a negative statement. The words not is added to the affirmative sentence to make it negative. यदि affirmative sentence में not add कर दिया जाए तो वह negative sentences बन जाता है. Okay. Next one, interrogative sentences. A sentences that is used to ask question. Interrogative sentences वह होते हैं जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं. Is called an interrogative sentences. Example, are you Mrs. Sharma? क्या तो Mrs. Sharma हो? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है और लास्ट में हमने लगाया क्वेश्चन मार्क. तो हमें आंसर देना होता है yes or no में. That's called the interrogative sentences. And what are you looking for? आपकी लुकिंग दिखने में कैसी है ना? तो यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन करनी होती है, क्वेश्चन का आंसर क्रिएट करना है. तो that's called the interrogative sentences. Interrogative sentences are of the 2 kinds. Number first, yes or no questions and the word questions. Okay. In the interrogative sentence, we place the auxiliary verb before the subject. Auxiliary verb subject से पहले auxiliary verb का प्रयोग किया जाता है. Auxiliary verb होते हैं जैसे is, are, am, has, have, had, was, were. तो auxiliary verb का प्रयोग किया जाता है. That's called the interrogative sentence. And we always put a question mark at the end of the interrogative sentence. Interrogative sentences के end में हमेशा क्वेश्चन मार्क ऐड किया जाता है.
एग्जाम्पल है दे, हमने बनाया दे हैव ब्रॉट स्वीट्स, तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ओके, तो अब हम इसको बनाएंगे नेगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, हैव बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे? जो हैव है ऑक्सिलरी वर्ब है वो हम उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, बनेगा हैव दे बॉट स्वीट्स। तो दैट्स क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ऐड हो गया है ना, क्या तुमने स्वीट खरीदी? तो ये हो गया क्वेश्चन क्रिएट हो गया। दैट्स कॉल्ड द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। In the interrogative sentence, first the auxiliary verb have is placed before the subject. A question mark is used at the end of the interrogative sentences as shown in the sentences 2. R. R क्या है? Auxiliary verb है। R हम पहले लगाएंगे, मीन auxiliary verb यदि हम पहले लगा देंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। The above sentences is an example of yes or no questions, which means the questions that can be answered in yes or no. ऐसे क्वेश्चन ऑक्सिलरी जब हम वर्ब से शुरू करते हैं सेंटेंस, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें केवल यस और नो में आंसर देना होता है। Such a question begins with an auxiliary verb. ऐसे ही क्वेश्चंस को हम auxiliary verbs कहते हैं। Some auxiliary verbs are, is, do, have, can, was, were, had, which help other verbs from tenses and voices. Okay? For example, what are you looking for? तो what क्या है? Question word है। आर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब एंड द यू सब्जेक्ट है एंड द लुकिंग फॉर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, above sentence is an example of question word. These questions cannot be answered in yes or no and begins with the question words such as, जो क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं जैसे what, why, when, where, whom, whose और विच, तो और उसमें क्या होता है, हमको आंसर की एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है, उसी को हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जो वर्ड, जो सेंटेंस हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं दैट्स कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जो वर्ड और जो सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उनको हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Are sentences which gives order. ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देते हैं and make request or efforts. Advice is called and the imperative sentence. ऐसे सेंटेंस जो सलाह, सुझाव आदि सब चीजें बताते हैं, उन्हीं सेंटेंस को हम imperative sentences कहते हैं। एग्जाम्पल है मदर प्लीज बाय मी ए पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स। तो ये क्या होगा, प्लीज, जहां पर क्या जुड़ गया, प्लीज जुड़ गया, तो प्लीज होने से बन गया रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट की इट्स कॉल्ड अ इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है डोंट ईट पोटैटो चिप्स। ये पोटैटो चिप्स मत खाओ, तो ये क्या किया जा रहा है, इस वाक्य में कमांड किया जा रहा है ना। नेक्स्ट है हैव सम फ्रूट्स दे आर हेल्दी। कुछ फ्रूट लाओ क्योंकि वो हेल्दी होते हैं, दैट्स कॉल्ड द एडवाइस, है ना। एडवाइस दी जा रही है या फिर सलाह दी जा रही है, सजेशन किया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड द इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर क्या हो गया, कमांड किया गया। नेक्स्ट टेक द मेडिसिन ट्वाइस डेली, आपको मेडिसिन डेली लेनी है, क्या किया गया, एडवाइस दी जाती है। दो सेंटेंस बिगिंस विद अ वर्ब। ये सेंटेंस भले वर्ब से शुरू हो रहे हैं लेकिन इन सेंटेंसों में हमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट आदि देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इन सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहती हैं। और वैसे भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑलमोस्ट बिगिंस विद अ वर्ब। ये जो सेंटेंस होते हैं हमेशा वर्ब से ही शुरू होते हैं क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट होता है यू इज अ इम्प्लाइड, वो छुपा हुआ होता है। ओके,
नेक्स्ट है प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो। तो प्लीज यहाँ पर आ गया तो हो गया रिक्वेस्ट। इन द सेंटेंस दैट आर द रिक्वेस्ट यूजुअली प्लीज इज यूज्ड टू बिगिन द सेंटेंस फॉलोड बाय द वर्ब। जब हमें इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज का यूज किया जाता है तो वो हमेशा वर्ब से पहले लगता है। इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज फॉलोड बाय ए फुल स्टॉप, और इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हेल्प इन कम्युनिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यह जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो बातचीत करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट कर देता है, जैसे सरप्राइज, एडमायरेशन, appreciation and the wonder and the shock. That's called the exclamation sentence. Example, what a beautiful baby is. ये कितना सुंदर बेबी है। तो हमने क्या किया, strong feeling create कर रहा है। Next है how wonderful the painting is. Next, an exclamatory sentence begins with what or how. हमेशा exclamatory sentence what या how से शुरू होते हैं। It is followed by the exclamation mark, और उसके लास्ट में जाकर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ओके, फॉर एम्फेसिस द वर्ड ऑर्डर इज अलर्टेड इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, एग्जांपल है ही इज अ ब्यूटीफुल बेबी, वह कितना सुंदर बेबी है। ये क्या है, हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, मीन असर्टिव सेंटेंस है। तो ही क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब। ठीक, the above sentences transforms into an exclamatory sentence. कैसे? What a beautiful baby is he. What a beautiful baby he is. और लास्ट में exclamatory mark. ठीक है, इस तरह बच्चों ये क्या बन गया, exclamatory sentences बन गया। The painting is wonderful. ये पेंटिंग कैसी, बहुत सुंदर है। तो ये क्या है, हमारी सिंपल सेंटेंस है, मीन असर्टिव सेंटेंस है। इट्स ट्रांसफॉर्म इनटू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। करेंगे हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज, ये कितनी सुंदर पेंटिंग है, तो इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आ सेंटेंसेस कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। एक सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अनुसार प्रयोग किया जाता है तभी हमारा सेंटेंस रेडी होता है। एंड टुगेदर फ्रॉम ए क्लूज, इन दोनों को मिलाकर के क्लूज रेडी होती है। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड्स ऑफ क्लूज और द क्लूज दैट फॉर्म्स अ सेंटेंस, और इन्हीं के अनुसार क्लूज को जब लगाया जाता है और एक कंप्लीट सेंस निकलता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। दे आर द फोर बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर फर्स्ट, सिंपल क्लूज, कंपाउंड क्लूज, कॉम्प्लेक्स क्लूज एंड द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लूज। नंबर फर्स्ट है सिंपल। सिंपल किसे कहते हैं, वन डिपेंडेंट क्लूज, जो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होती है, केवल मेन होती है, वन होती है। ओके, नेक्स्ट है कंपाउंड, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लूज, जो दो या दो से ज्यादा जो क्लूज होते हैं वो अपने आप में डिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है वन इंडिपेंडेंट, एक तो स्वतंत्र होती है क्लूज विद वन मोर डिपेंडेंट क्लूज, और दो या दो से ज्यादा जो क्लूज होती है वो वन वाले पर डिपेंडेंट होती है। That's called a complex. And at least two independent clause with one and a more dependent clause. इसमें दो या दो से ज्यादा भी क्लूजेस डिपेंड हो सकती हैं और एक दूसरे के ऊपर काम भी, मेन क्लूज भी हो सकती है। That's called a complex compound clauses. Okay. Number first है simple sentences. Simple sentences contains a single, complete, independent clause with one finite verb and the one subject. Simple sentence हमेशा simple. Simple sentence हमेशा single, one clause पर dependable होता है, जो हमेशा one finite verb, जिसकी एक निश्चित क्रिया होती है और उसी के अनुसार उसका सारा वाक्य होता है, उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, डॉग बार्क्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी कहाँ करती है, सन का मूव्स करती है। हर्ष बॉट अ पेन, उसने क्या किया, एक कौन
पेन डॉट किया. डॉग्स, द आर्ट एंड द हर्ष आर यूज द सब्जेक्ट. ये क्या है, हमारी सब्जेक्ट है इन दीज सिंपल सेंटेंसेस. ओके, sentences which has only one finite verb. इन सेंटेंस में केवल एक निश्चित क्रिया होती है is called the simple sentences. Okay. Next है compound sentences. Compound sentences are made up of two or more independent clause. इसमें दो या दो से ज्यादा जो क्लूज होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है. दे आर द ज्वाइन टुगेदर, और वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बाय मीन्स ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंजक्शन के द्वारा. ओके, एग्जांपल है द बॉय रेन अवे, लड़का भाग गया. और दूसरी है द ओल्ड मैन वाज लेफ्ट अलोन, बूढ़ा आदमी घर अकेले छोड़कर चला गया. तो दोनों सेंटेंस को हम इंक्लूड करेंगे एंड से. किससे करेंगे, एंड से. In the above sentences has the following two independent clues joined with the coordinating conjunction and. Okay, दोनों मेन क्लूज हैं. दोनों मेन क्लूज को जो हमने ऐड किया, किसी किया, एंड से. तो एंड क्या हो गया हमारा, कंजक्शन क्लूज. The next है the boy ran away and the old man was left alone. Our sentence is made up of two or more principles or main clause is called a compound sentence. जहां पर दो या दो से ज्यादा मेन क्लूज होती हैं उसी को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. क्लूज ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड क्लूज. इन दोनों कंपाउंड सेंटेंस को ऐड करने के लिए कंपाउंड क्लूज की, कोऑर्डिनेटेड क्लूज की नीड होती है. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. These sentences have one independent. इस सेंटेंस में एक तो इंडिपेंडेंट क्लूज होती है एंड द अदर क्लूज कनेक्टेड टू द वन एंड द मोर देन वन डिपेंडेंट. एक या एक से ज्यादा जो क्लूज होती हैं वो वन जो इंडिपेंडेंट है, मीन स्वतंत्र है, उसके ऊपर निर्भर होती है, इंडिपेंडेंट होती है. एग्जाम्पल है प्रीति ऑर्डर्ड लंच फॉर मी. प्रीति ने मेरे लिए लंच ऑर्डर किया बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंग्री. मैं बहुत भूखी थी. तो मैं भूखी थी तो किसने किया ऑर्डर, प्रीति ने. तो प्रीति क्या हुई यहाँ पर, मेन क्लूज हुई. और आई किसके ऊपर डिपेंड है, प्रीति पर, आई पर. देयर आर द टू फिनिट वर्ब्स इन द अबव सेंटेंस. यहाँ पर दो फिनिट वर्ब्स आती हैं. जिसे ऑर्डर्ड, ordered with next is the subject and was the feeling with I the subject. There are thus two clauses. Number first, Preeti ordered lunch for me. Number second, because I was feeling hungry. A sentence is made up of a principal or main clause and the one or the more subordinate clauses is called a complex sentences. Okay. Next, compound complex sentences. These sentences contains at least two dependent clause. इसमें independent कितनी होती है, two clause होती हैं and the one and the more than one dependent clause. इसमें दो तो इंडिपेंडेंट होती है और वन डिपेंडेंट होती है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसलिए हम इसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं. एग्जाम्पल, शी हैड होप्ड दैट हर बेस्ट फ्रेंड वुड बी ऑन हर साइड व्हेन शी अपीयर्ड बिफोर द कमिटी फॉर क्वेश्चनिंग बट शी वाज wrong. Okay. In the above sentences contains four clauses, two independent and the two dependent clauses. The independent clauses are linked together with the coordinating conjunction, but while the dependent clauses are introduced by subordinated conjunctions. Okay. She had hope. उसकी ऐसी आशा थी. ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है.
that her best friend would be on her side. ये हो गया dependent clause. Okay. When she appeared before the committee for questioning, ये हो गया dependent clause. She was wrong. It's a independent clause. Okay. So that's called the complex compound sentences. Okay. Next. Next. Transformation of simple sentences into compound sentences. This is easy achieved by linking the simple sentence. यदि हम simple sentence को किसमें compound में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो कैसे? Independent clause using coordinating conjunction so that is single sentence is formed. जब जिसमें केवल एक क्लोज और एक मेन क्लोज होती है उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. केयर शुड बी टेकन टू यूज द appropriate conjunction so that the meaning of the resulting sentences is the same as the meaning conveyed by the separate simple sentences. Okay. Study the examples. Blow carefully. Number first. I warned him of the risk. Okay. I warned him of the risk involved. इसमें risk involved है in the treatment. He decided to go. इसलिए वह जाएगा. नीचे के वो जाएगा. ये हो गया simple. I warned him of the risk involved in the trip. Still, ताकि he decide to go. जिससे वह जाके निर्णय ले सके. That's a compound sentence. Second है there is a nobody in the house. यहाँ घर में कोई नहीं है. Everyone has already gone to bed. सब लोग बेड पर जा चुके हैं. Simple. Either there is nobody, यहाँ कोई नहीं है घर में, और everyone has already gone to bed. That's called a compound sentence. ठीक है. यहाँ पर दो coordinate हो गई और दो main clues हो गई. ठीक. Next है transformation of the simple sentence into the complex sentence. Two or the more simple sentence could be combined into a single sentence. इसमें दो सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस को कंबाइंड जोड़ा जाता है कंजक्शन द्वारा, उसी को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. यूजिंग इसमें यूज किया जाता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का. ओके. Thus, if there are the two simple sentences, यदि हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस है तो then in the order to the convert into the single complex, तो हम इसे सिंगल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. one simple sentence should be the converted. यदि हम सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं into a subordinate clause तो वह हमारी जो दूसरा सेंटेंस होता है सिंपल, जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लूज बन जाता है. One should functions as an independent clause और उसे independent clause के साथ ऐड कर दिया जाता है. Then we make a complex sentences. Okay. Carefully study the statement given below. Number first, everyone around us was pessimist about the outcome of the match. एक आदमी को यह आशा थी कि हम यह मैच जरूर जीतेंगे. We lost our nerves. Two simple sentence. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? सिंपल है. ओके. नेक्स्ट है we lost our nervous. हम अपना धैर्य खो चुके थे because everyone about us was pessimist. क्योंकि प्रत्येक आदमी को ये ऐसी आशा थी कि about the outcome of the match. We lost our nervous क्योंकि हम बहुत ज्यादा नर्वस हैं because क्योंकि everyone about us was pessimist. क्योंकि प्रत्येक आदमी आशावादी था कि about the outcome of the match, कि हम इस मैच को जीत जाएंगे, इसलिए हमने अपना धैर्य खो चुके थे. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद द एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन. इसमें रीजन के साथ हमने क्या कर दिया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ऐड किया है. नेक्स्ट, आई हियर्ड द न्यूज ऑफ हर ब्रिलियंट सक्सेस. मैंने उसकी ब्रिलियंट सक्सेस की न्यूज जैसी सुनी, आई वाज ओवरजॉयड. मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया. दैट्स कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. आई वाज ओवरजॉयड. मैं बहुत खुश था वह जब आई हियर द न्यूज ऑफ हर ब्रिलियंट सक्सेस. दैट्स कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस.
नेक्स्ट है परम. परम could not believe them. परम को उस पर विश्वास नहीं था. That's why they kept on the shouting. वो चिल्ला रहा था. He had been a tailor. वह एक टेलर है. He had revealed their secret to everyone. क्योंकि वह अपने पास बदले की बहुत सारी भावना छुपा कर रखता है. That's a 4 simple sentence. परम could not believe them. परम को विश्वास नहीं था. When जब they kept on the shouting, जब वह चिल्ला रहा था that he had been a traitor. क्योंकि वो क्या है? ट्रेटर क्या है? वो एक बदला लेने वाला है. बिकॉज क्योंकि had revealed their secret to everyone. क्योंकि वो प्रत्येक आदमी के प्रति रहस्य जानता है. ओके, that's for the complex sentence. Next है question tag. A question tag is the special construction used in English. It is the statement followed by a mini question. The basic structure of a question tag is given below. Number first, it's beautiful. Question tag क्या है? यहाँ पर हम apostrophe s जैसे हम लगा देते हैं तो इसमें question tags. Okay, it's beautiful. यह सुंदर है. तो नेगेटिव टैग बनेगा it isn't it. यह नहीं है. नेक्स्ट है you know me. तो नेगेटिव बनेगा don't you. He finished it. नेगेटिव टैग बनेगा didn't he. दैट्स नेगेटिव को हम वहीं पर आना है पॉजिटिव. तो नेगेटिव हमारा it isn't very good. तो यह बहुत अच्छा है. तो हम पॉजिटिव टैग करेंगे is it. हाँ है. नेक्स्ट it hasn't rained. तो पॉजिटिव करेंगे has it. It can't be. Can it. Okay, that's replying to the tag questions. To reply, use the same auxiliary. क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि जब हम एपोस्ट्रोफी ऐसे वर्ड को क्वेश्चन टैग बना देते हैं, है ना, तो जब हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको एक्सिलरी जो एज इट इज होते हैं उसको ऐसे ही उतार कर पूरा पूरा लिख देते हैं. जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन टैग है isn't beautiful, isn't in it. आंसर है yes it is. I think it is very beautiful. क्वेश्चन है it isn't very good, is it? Answer है no it is. It isn't. No it isn't. In fact it's terrible. Look at the special cases of the correct responses. Tag questions कहता है I am right, aren't. Okay, तो correct response कहते हैं yes you are. Next, we have to learn this, don't we? Answer है we have to learn. Next, I have been working hard, haven't it? Correct कहते हैं use first auxiliary. You have nothing wrong, did it? Answer है take statement with nothing, nobody adds at the negative statement no it didn't. Next one, let's go, shall we? So the let us. Okay, she'd better have leave now. He hadn't she. So she had better. Had it. Had is the main one. Okay, that's called the question tag. Next one, remember. Positive statement convert into the negative question tag. Negative statement convert to the positive question tag. Auxiliary in the statement, यदि statement में auxiliary होती है तो depend तो convert the auxiliary repeated in the tag. No auxiliary तो do, does या did in the tag. I am तो होगा the tag is aren't. नेक्स्ट पॉजिटिव कमांड्स होगा तो क्या होगा हमारा नेगेटिव कमांड हो जाएगा. जैसे विल यू, वांट यू. नेगेटिव कमांड होगा दैट्स अ पॉजिटिव कमांड. द टैग इज विल यू. ओके, लेट अस तो द टैग इज शैल यू. ओके, इस तरह जो हमारी क्वेश्चन टेक्स्ट होता है जब हम उसको आंसरिंग बनाते हैं तो पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव करते हुए चले जाते हैं. ओके ओके, देन
Kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.